हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो के होस्ट आरजे एंकर कोमल। आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। लिसनर्स, आप सभी को पता है कि हम आचार्य 90 FM के हमारे डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट गेस्ट को मिलते रहते हैं। उनके साथ हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके फील्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। सो हमारे आज के ये बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बहुत ही बढ़िया गेस्ट मिस्टर अजित दे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आचार्य 90 FM पे। सो मैं सर के बारे में बताना चाहूँगी। मिस्टर अजित दे सर्व एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स एट टाटा क्लासेज लिमिटेड, bringing over 2 decades of technological expertise within the prestigious Tata Group. A true technologist at heart, he holds a Bachelor of Engineering in Electronics, Telecommunication and completed his business analyst program from the George Washington University in Information Technology. So basically बहुत बार ऐसे होता है ना कि फैमिली से बच्चों को बोला जाता है कि आईटी में जा, आईटी में अपना करियर कर और फिर इंजीनियरिंग में कर। सो मुझे लगता है कि सर के टाइम पे शायद वही एक फॉर्मूला था कि आईटी में जाना है, इंजीनियरिंग करना है। सो आज सर हमारे कॉलेज में टेकेज और पिक्सल के लिए एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और सर के साथ हमने बातें भी की। बहुत अच्छा लगा। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपको कैसा लगा हमारे एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज में आके बच्चों के साथ बात करते और ये फेस्ट में हमारे साथ एज ए चीफ गेस्ट ज्वाइन करके? पहले तो थैंक यू कोमल जी फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर to be part of Acharya 90 FM. Yes. It's my privilege and honor. To be honest, I think Komal ji, this is really heartwarming to see as a college someone is running a radio channel. And to this is lovely to see a proper setup of a radio station. This is really mind blowing. I'm actually out of words to a lot of that sense where we see this kind of a setup and Komalji is running it very well. Is something that inspires me as a technologist, as an innovator. I think college has that mindset to really think out of the box. Okay, but it is not that each and every college has been doing. I've hardly found this to be there in any other college, since I'm associated with so many technology colleges like MIT and others. It is really hard to see. Kiddos, and hats off to you to run this in such a professional way and in such an engaging way. Yes. To viewers, I guess it is a proper radio station. Please stay tuned to this. Yes. It's very informative. The kind of brief that you gave me is mind blowing. Mind blowing is the word that comes to my mind. ये बहुत साधारण सी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Listeners also should be appreciating this a lot. I understand the kind of effort that you are taking to run this channel. 24 hours, 365 days is commendable. Commendable is how I would say. Komaji. Thank you so much, sir, for the kind words. So my first question is to you is, we like to know about yourself and how you become the CEO, CTO. About myself, I think the only word that comes to my mind is a curious person. Okay. Nice. Curiosity is there. I in the industry I'm known to ask why. I only ask why. ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? It reminds of that song
but ये ऐसा मैं क्यों ऐसा है? क्यों हूँ? Absolutely, मैं ऐसा क्यों हूँ? So it is that kind of a thing. Yeah. Is that curiosity? Yes. And I guess curiosity. I have been seeing this, and now I can reflect. And इसमें मुझे एक 3 Idiot वाला सीन याद आता है जहाँ पे आमिर खान फ्रिज खोल देता है लेकिन वो फिट नहीं कर पाता. एंड आई सी ए रिफ्लेक्शन वेरी वेरी सिमिलर. इन माई यंगर डेज मैं टीवी खोल देता था, मेरे फ्रिज खोल देता था, सब कुछ मैं खोल सकता हूँ. और कोई मैं फिक्स कर देता था. बहुत सारे मैं अभी भी जंक यार्ड पड़े हुए हैं. And one of the things is मम्मी पापा अभी भी उसको संभाल के रखे हैं, दो भी still it is junk. It is still Memories. Is the memory. So every time I go ये junk बेच दो, but I think they always says that ये यादें हैं, ये रिफ्लेक्शन है. So बहुत कुछ है जो घर पे नहीं चलती है. मेरे बच्चे और वाइफ भी बहुत परेशान रहते हैं कि ये तो सब कुछ खोल सकता है, ये सब कुछ कर लेता है. But I think that is the whole mantra, I would say on a serious note, is that curiosity is an ability to ask why, and really question the status quo, कि ये ऐसा क्यों है, kind of a thing. इसका भी एस्पायर्ड नहीं हूँ कि मुझे CTO बनना है या बट आई थिंक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आई एम देयर फॉर द लास्ट 14 years. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं कुछ बनाऊँ जो यूजर्स को अच्छा लगे, दे फील दे कैन यूज इट. आई थिंक दैट्स another level of satisfaction, and that is where technology plays such a critical role, that it can reach out to masses in a very short span. पहले के ज़माने में कुछ भी होते थे तो वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन फिर तीसरा जनरेशन में जाके we will start seeing the outcome. But in comparison technology is where आपके पास एक थॉट है, छोटा सा है, बट आप उसको मल्टीपल टाइम रिफाइन कर सकते हो, एंड यू कैन गो बैक टू योर कस्टमर एंड योर यूजर टू वैलिडेट दैट. That's the digital era, I would say, and hence you will see digital era is unfolding very rapidly. ये ऐसा नहीं है कि हम computers we saw somewhere in 1980s. And then within 20 years we saw an internet age. Now we are seeing another close to about 14 years we are seeing an AI age. So this is where that growth is happening, because we are able to create stuff and quickly see कि अच्छा ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. That's a big change, and that's what I'm loving it, I guess. So basically आपके साथ ये नहीं हुआ था कि मुझे मेरे पेरेंट्स बोल रहे, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं या फिर मैं ये फील्ड में जाऊं, मैं मेरे पेरेंट्स का नाम बड़ा करूं, बल्कि ये अपने आप आपके अंदर एक पैशन था और एक हॉबीज आपके अंदर थे. और आप कैसे मुझे वो एडिसन के एग्जांपल्स याद आए, मतलब जो नहीं, आई थिंक एडिसन तो बहुत अलग लेवल पे, बट ग्रेट पर्सनालिटी, it's not I think my parent never thought कि इसके बारे में कुछ सोचना है, ये जो कर रहा है करने दो, ऐसा टाइप है. Not very good in education, means education was I was I would say above average, possibly, but always a curious mind. I think through the years I have also evolved. That's something which I've learned. I think the early years do define your path, but I think as a message I will only say that it is not the only break and make and break situation. I think this is where one has to evolve and keep improving yourself. Yes. So that's what I would say. But I think आपने बहुत मेरे बचपन के याद दिला दिया, तो thank you कोमल जी for that. I think it's amazing. Yes, thank you so much, sir. Okay, now my next question is to you is, what inspired you to pursue a career in technology, and what motivates you to continue innovating and
इन फ्यूचर व्हाई यू थिंक अबाउट इट, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? So technology, again, IT perspective, I never thought of being in the IT, but definitely engineering, because I love to create stuff. Abhi bhi weekends mein normally I try to spend some time and create stuff. Creating stuff was something which is there. कुछ हाथ से कुछ बनाओ, लकड़ी का हो या मेटल का हो, बट कुछ बनाओ, वो हमेशा एक रहता है, एंड वो एक पैशन है. दैट आल्सो हेल्प्स मी चेंज माय मोनोटोनस लाइफ, कि वेयर आई गिव सम टाइम टू माई सेल्फ एंड डू इट. दो विद द करंट वर्कलोड नहीं हो पाता, बट आई ट्राई टू डू दैट. लेट्स से आफ्टर दिस आई विल रिवाइव दैट. So yes, engineering was something which was always passion, I would say, very natural, I would say. Raju Srivastava, possibly, that kind of a thing. But I think from technology perspective, it was, I think the whole change happened somewhere जब मैंने 12th पास किया, and then I was waiting for my result, and वो point पे I normally have an habit कि during the break I do something or the other. कुछ courses करूँ, pottery करूँ या कुछ करूँ, to keep myself busy. तो वो point पे I heard of a professor called Vijay Mukhi. He was he's a guru of information technology. He's no more, but he was running a batch to talk about technology and programming at Tarte. I guess that was the turning point. That was the turning point. वो class में I was going, and then I got to understand technology from a different perspective altogether. Technology is not about just programming. It's the way in which you think, the way in which you conceptualize and relate it to something real life. ये हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब सब कुछ कंप्यूटर है, but it is actually not. It is all related to a normal life or a human life, and all the technical things. Yes. So वो जो analogy creation था from a human life, how technology is inspired, I think this is where Vijay Mukhi sir actually helped me take that path, and take me through the technology path. But yes, that was one coincidence that happened, and then I think there was no look back. I would say no look back. सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आप जब से आपके एक्सपीरियंस और आपके चाइल्डहुड से आप सब चीज़ें बता रहे हैं, सो मुझे माई माइंड सेट वॉज चेंज, कि मेरा माइंड सेट अभी ऐसे हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ क्रिएटिविटी. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मुझे वो पढ़ाई नहीं करना है, वो हैवी जा रहा है, वो मैं इतना कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे वो एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे हैं. सो ये सब जो मेरा माइंड सेट था वो पूरा अभी बदल चुका है, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ बात की, आपने इतनी अच्छी चीज़ें सब बताई, आपने आपके एक्सपीरियंस शेयर किए. सो मुझे लगता है कि जो भी लिसनर्स हमारे ये सुन रहे हैं, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, और जो कि आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, शायद उनका भी आईटी फील्ड की तरफ देखने का नज़रिया जो है वो डेफिनेटली बदल जाएगा. सो हम स्टूडेंट्स की रिलेटेड कुछ बात करेंगे. सो बहुत बार स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती है ड्यूरिंग दी कोर्सेज. सो ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज आती रहती है, और वो डिफ़िकल्टीज से स्टूडेंट्स ने कैसे ओवरकम करना चाहिए? सो कोमल जी, मैं पॉसिबली दूसरी वाली क्वेश्चन मैं पहले आंसर करूँगा. I think वहाँ से we'll get some input. Yes. But difficulty in life we always get. ऐसे नहीं हो सकता कि आप you are in this world and you will only find good thing. It's a sinusoidal curve. कुछ अच्छा होगा, फिर उसके बाद कुछ बुरा होगा ही होगा. अब आप कैसे देखते हो, क्या नज़रिया होता है? And ये बुरा is nothing but a challenge. A challenge where it makes you much more stronger and a better person when you would see how these challenges are there. Particularly in a corporate world,
difficulties are there, and it is how you take those difficulties. So this is where, in a corporate environment, and that's the culture that we all try to promote, is you need to celebrate your failures. And once you start celebrating your failure, you then know कि अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की, क्योंकि मुझे मेरे peers help करेंगे कि अच्छा अरिजित आपने शायद यहाँ पे गलती की जिसके वजह से you failed, and वो perspective I would have not thought about. So that culture of celebrating failures is so important, because as you start celebrating failures, then you are also grounded, and moment you are grounded, there is somebody who will help you and say that please look at this aspect, and that will improve it. So for me, that's the biggest takeaway, and I thought of sharing this. This has worked in my journey so far. It is always to be compassionate, grounded, and keep celebrating failures. That is my piece of advice to all students. In my student life also, I was not kind of a topper or things like that. But in every stage, every milestone, I have only improved. I have kept improving. That gives me that sense of completeness. जब भी मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ, my daughter is in 10th, and I always say to her is that 10th is a milestone. Take it as a milestone. It's not the end of the world. आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे, doesn't matter. This is one milestone. As you go up your milestone, your challenges will keep increasing, and as your challenges increases, there would be a fair share of failures, and you need to keep enjoying those share of failures. And as you keep enjoying those share of failures, you will be a better person at the end of it. And students, coming back to the first question, student तो मैं भी हूँ. What are the difficulties? Student तो मैं भी हूँ. I am been learning. I am still a student. I am still learning. I don't know the entire facet of human life. So मैं हर दिन कुछ सीखता हूँ, हर दिन कुछ गलती करता हूँ, हर दिन कुछ challenges आती है. But it is how you look at it. So in these era, स्टूडेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि मैंने 21 क्रॉस कर दिया, ग्रेजुएट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया और आई एम नो मोर ए स्टूडेंट. इट्स नॉट दैट. वी हैव सीन how much information technology and across different sector, how rapidly things are changing. So it's very important for us, a professional, to always go back to academia and keep learning new things and learning something. So that's so critical, and students, we are always a student. I like the answer most. क्योंकि ये सिर्फ IT और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, बल्कि ऑल द स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि हम सभी लोग, क्योंकि डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हम सबको आते हैं. फ़र्क ये है कि हम उससे कैसे ओवरकम करते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे फेलियर को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. Absolutely. That's one thing that we should all do. Celebration of failures are that, and then this is where everyone is getting surprised कि आप celebrate कर रहे हो failures को, then where is the failure? So psychologically also it works a lot. Yes, definitely. Okay, so last few questions. What advice would you give to our students who are interested to pursue the career in technology but may not know where to start? बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बट हमें पता नहीं कि कैसे स्टार्ट करें. टफ वन. बट मैं शायद कोई एक मैजिक पोशन तो नहीं बोल पाऊंगा, बट आई थिंक एटलीस्ट आई कैन टॉक फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. I think the only way to find your path is keep doing. When I started my career, my first career was in ECIL. ECIL is a company which created the EVMs. So I started as a network engineer, and my first project was lay out the fiber
in Tata Memorial Hospital in Parel. Uh, uh, and it was a coincidence कि I was just out of college and I had to go and work in laying fiber at that point in time, 1998 was a very new thing, and a person, a fresher like me, getting into it was something that particularly that group never did. So when I left that organization, I asked कि आप मुझे ये वाले project में क्यों दिए? Because that's where he said, I had given you one assignment, you were quite curious, you did things in a different way, Yeah. which we never thought of. And then we said, okay, this is the initiative that we are running, आप इस पे कुछ करो. We know आपको कुछ पता नहीं, but since you had that curious mind, you had that curiosity कि you can ask these questions why, we thought we should be putting there, and rightly so, क्योंकि मैंने भी फ्रेशर जैसे मैंने देखा हुआ है, जब मैं फ्रेशर से बात करता हूँ या मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि are they curious mind, are they do they have the ability to ask why. ऐसा नहीं है कि मतलब आप आओ काम करो and do and go home. It has to be that curiosity. I'm again going back to the fundamentalist curiosity is the most important. I was asking a lot of questions. फिर उसके बाद वो project के बाद I was moved on to the whole EVM system, which was embedded technology. I spent some good time there. वहाँ से एक learning definitely and that's one of the way where I was able to utilize Vijayamukhi's sir's principle and make some changes. Again, it was a possibly a percent to what is there, 1% contribution भी होगा या उससे भी less होगा, but it evolved me as a person. Yeah. And then parallelly I was working. I was also working with some other in the night. I was working with another company. Again, there was no dual role. वहाँ पे I was just looking as an intern. मैं वहाँ पे work कर रहा था to see कि क्या what is the other industry all looking like, which was a media company by the way. So hence I was also very interested to know कि यहाँ पे Pixel में क्या हो रहा है. So media company एक है which is not technology, and then वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी सोचा कि मीडिया कंपनी में मैं क्यों नहीं टेक्नोलॉजी करूँ, वहाँ पे क्यों ना इम्प्लीमेंट करूँ. सो मैं जब ECL से मूव करके आई वेंट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही सेड प्लीज जॉइन अस and it would be a pleasure. I did that, and then that's how evolved. To sum it up, I think curiosity, as I earlier mentioned, but other thing is the hard work. Is the hard work that you need to put in. Nothing comes free in this world. अगर कुछ बनना है definitely hard work डालना है. Hard work and the continuity. And the continuity and there is no other mantra. मेरे अनुसार यही एक secret sauce है, hard work and more of hard work. Exactly. So इसका मेरे पास अभी तक कोई alternative नहीं है. Exactly. थैंक यू सो मच सर. ओके माई लास्ट क्वेश्चन इज़, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छी चीज़ें, और कभी ऐसे सोचा नहीं था कि कभी मुझे भी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी लग सकती है, ये फील्ड इतना अच्छा लग सकता है. बट ये सुन के भी अच्छा लगा कि सर का मीडिया के साथ भी देयर इज़ अ कनेक्शन. सो थैंक यू सो मच सर. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स? Message is really I think in the current era lot have changed, lot of change in the sense access point. Exactly. In many sense I am also Chamborkar, and मैंने भी ये कॉलेज को ग्रो होते हुए देखा. I think बहुत कुछ current generation को is accessible, and my message to it is to the younger generation is stay focused
and you have lot of other options and Options. variations, which college like Acharya is providing. So it's not that it is given. I think this college is also spending a lot of effort in ensuring this is being offered to the students. So I think it's very important that students should also respect that and take the utmost use of it, of this facility. It's a wonderful facility out here, and as a student, I think they should also respect it and use the most out of this facility with the professor interaction, with the labs. They should keep interacting more and more, and this is where they will learn, and ये कहीं ना कहीं down the line ये Yeah. काम करेगी. I can guarantee and assure each and every student to it. क्योंकि there was many times in my student life I was also always asking ये मैं क्यों कर रहा हूँ, but आज मैं अभी भी मैं with all honestness ये बोल सकता हूँ कि जो भी मैंने in my past whatever I have done, I was able to use it. Okay, media life, I never thought media life would be relevant to a technologist, but I am just saying with the media I have a great visualization power. Yeah. Okay, I can visualize things much beyond a technology person. So here ऐसा नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो, you keep answering that question and then train निकल जाए. वो moment पे I think you should be grasping as much as you can, and it will always help. Yeah. I think that's the message I would give. Exactly. बहुत बार ऐसे होता है ना कि वो टाइम पे हमें जो करना चाहिए, जो exactly लेना चाहिए, वो हम लेते नहीं और फिर समय निकल जाता है हाँ और जी, फिर हम सोचते बहुत है हम ये क्यों कर रहे कर हैं, ये रहे क्यों कर रहे हैं, but I think Yeah. I can assure you Yes. with my experience, everything that I have done is paying off now. Yeah, exactly. So मुझे लगता है this is the final result. बिल्कुल. Yeah. So हमारे साथ हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे मिस्टर अजित दे. सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. आज आप हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज में फॉर आवर स्टूडेंट्स एज अ चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़े, हमारे आचार्य 90 FM पे हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छी बातें भी, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी बताई. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सो आई होप लिसनर्स आप सभी को ये हमारा इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑन आचार्य 90 FM एंड आप कहीं जाइएगा मत. कीप लिसनिंग आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. थैंक यू. Thank you, Komal ji. Thank you, sir.